السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا کنیکشن کیمپ کا آئیڈیا تھا وہ چیئرمین محسن نقوی صاحب کا آئیڈیا تھا, اور اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ آگے ہمارا سیزن اتنا بزی آ رہا ہے کہ ٹیم ٹریول کر رہی ہوگی کنٹینیوسلی, تو آگے اپرچونیٹیز اور موقع اتنے نہیں ملیں گے کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے برین اسٹارم کر سکیں. سو اس لیے اس کی ٹائمنگ کچھ ایسی کری ہم نے کہ اتنا ٹائم مل جائے کہ ہم ایک تو سارے ادھر اویلیبل ہوں, سارے اسٹیک ہولڈر اکٹھے ہو جائیں, اور یہ کہ جو چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کو ایکشن کرنے کا ٹائم بھی مل جائے بیفور دا ٹیم اسٹارٹس ٹریولنگ. تو 3-4 موٹی موٹی چیزیں تھیں جن کے اوپر ہم نے برین اسٹارم کیا آج, اور شاید ضرورت بھی تھی اس وقت. ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت سب فیل کر رہے ہیں کہ پرفارمنسز جو ہیں خواہ وہ پلیئرز کی ہو یا مینجمنٹ کی ہو وہ بہتر ہو سکتی ہیں. تو ایک آئیڈیا یہ بھی تھا کہ ہم سب سر جوڑ کے بیٹھیں اور آئیڈینٹیفائی کریں ان مسئلے کیا ہیں, ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, ہمارا ویژن کیا ہے, اور اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا سٹیپس لینے ہیں. تو اس کا ایک روڈ میپ بنایا کہ کس طرح ہم ری اگنائٹ کر سکتے ہیں ایکسلنس کو, کس طرح ہم سکسیس کو پانے کے لیے کون سے سٹیپس ہیں جو ہمیں ضروری ہیں کرنے کے. اور ان میں سے ایک آبویس آئٹم تھا جو میرے خیال ہے ہم سب پہلے سے بھی جانتے تھے, بٹ اچھا ہوا ایک موقع ملا, ایک اوپن ٹرانسپیرنٹ سیشن تھا جس کے اندر ہم کھل کے ایک دوسرے سے بات کر پائے, اور یونٹی کے اوپر یکجا ہونا کے اوپر بات ہوئی, کولیبوریشن کے اوپر بات ہوئی, کمیونیکیشن کس طرح بہتر کرنی ہے اس کے اوپر بات ہوئی, جو مسئلے آ رہے ہیں ان کو کیسے ریزالو کرنا ہے اس کے اوپر بات ہوئی, کیا کمٹمنٹس ہیں جو ہم مینجمنٹ کے طور پہ یا پلیئرز کے طور پہ دینا چاہتے ہیں ٹو پاکستان کرکٹ اور ایک دوسرے کو, اور کیا آسکس ہیں ہماری, کیا ڈیمانڈز ہیں ایک دوسرے سے, کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں مل جائیں تو ہم امپروو کر سکتے ہیں. تو اٹ واز اے ویری گڈ سیشن, اینڈ کچھ ایکشن آئٹمس ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں, اپنے پاس رکھ لی ہیں. میں زیادہ شیئر نہیں کروں گا بیکاز وہ انٹرنل کنزمپشن کے لیے, لیکن اٹ واز اے ویری گڈ پروڈکٹیو سیشن, اور انشاءاللہ اس کے اوپر اب فالو اپس ہوں گے, اور لانگ ٹرم اسٹریٹجی اینڈ شارٹ ٹرم گولز دونوں کے اوپر کام ہوگا, اور انشاءاللہ اس کے ریزلٹس بھی آپ کے سامنے آئیں گے. تھینک یو سمی. Gary. It was a fantastic time today to be part of this connection camp. I think the intention around it was to align our purposes for the team. I think we all agree we want the Pakistan team to be as successful as it possibly can be across all the formats. And we spend today just going through the various things that can help us and help the team be the best version of itself. So I think we achieved a fair amount in terms of what we want to do. I think some commitments from the team and the players in terms of their levels of professionalism was one thing that we spoke about that was really important. And I think the commitments around making sure that they present themselves as best they can for the nation and to bring pride back into Pakistan cricket. So I was very encouraged by it. I thought that the players were really engaged in the session, and they are very keen to do well for their country. Thank you, Gary. Jason? Yeah, I don't have much to add, guys. I'll echo the sentiments that have already been spoken. It was an enlightening day. It was an opportunity for everyone stakeholders to get together. Obviously, with domestic international schedules the way they are, this was probably our last opportunity to try and get together and connect, as we've spoken about, and I think identify areas and opportunities for us to look to collaborate as effectively as possible, or more effectively. And I think
as Gary said, there was a lot of really good, robust discussions and thoughts shared. Thought from the PCB and the players. I thought there was a lot of collaboration. I thought it was fantastic and great to be part of. Obviously, Gary and I, relatively new to Pakistan cricket, it was just a great opportunity for us to listen and learn, and we really enjoyed that. I've certainly learnt a lot. I can speak for Gary. I'm sure he's learnt a lot as well. So, look, a very productive day, and hopefully moving forward, we can start putting some things in place. Thank you. Thank you, gentlemen. जैसे हमारे तीनों गेस्ट ने कहा, it was about learning and improving and how to get better. ये discussion के अंदर रहा है. I'll open the floor. Please feel free to ask anything relating to the connection camp. Suhail. सीओ साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है. अभी आपने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में ये बोला कि परफॉर्मेंस बेहतर होना है नॉट एज फार एज द टीम इज़ कंसर्न, बल्कि जो मैनेजमेंट भी है. और एक और आपने फिक्रा बोला कि एक चीज़ की जिसकी कमी महसूस की गई है वो एक यूनिटी की कमी महसूस की गई है. आप समझते हैं कि ये पिछला हमारा इस सेशन में आप लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि ये जो दो चीज़ें थी कि ना हम दोनों का एक परफॉर्मेंस भी हमारी अच्छी नहीं रही है, और दूसरा जो यूनिटी का एक फुकदान नज़र आया ना सिर्फ फैंस को बल्कि मीडिया को या दूसरे लोगों को, उसको भी आपने आज एक्सेप्ट किया है. थैंक यू सोहेल भाई. एंड आई थिंक आज का सेशन था भी इसी सिलसिले में कि हम बड़ी ओपनली, सिंसियरली, कैंडिडली एक्सेप्ट करें, आइडेंटिफाई करें और एक दूसरे से कमिटमेंट मांगें और डिमांड्स करें कि किस तरह हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं और किस तरह हमें इकट्ठे काम करना है एज ए टीम, क्योंकि टीम स्पोर्ट्स है, प्लेयर्स के लिए भी और हमारे लिए भी एज मैनेजमेंट. तो ये इम्पोर्टेंट था सेशन इसीलिए भी, और ये चीज़ें बिल्कुल आइडेंटिफाई हुई और इन सब के ऊपर हमारा यूनानिमस व्यू था कि हमने इनको रिजॉल्व करना है गोइंग फॉरवर्ड, और उसके लिए क्या क्या टास्क हैं हमने वो भी आइडेंटिफाई किए, जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह फॉलो अप भी करेंगे. थैंक यू. सलमान भाई, जिस तरह अभी आपने बताया कैंप काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी आपने पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं, लेकिन टाइम बड़ा कम है हमारे पास, क्योंकि आगे हमारा क्रिकेट का सीज़न बहुत ज़्यादा बिजी है और हमारी परफॉर्मेंस जो है वो उससे ज़्यादा भयानक किस्म की है. तो क्या समझते हैं कि इस जो कैंप है, इस कैंप के बाद हम जो फैंस हैं और जो लोग देखना चाहते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को जो डूब चुकी है, क्या वो दोबारा ज़िंदा हो सकेगी? क्या आपके नज़दीक इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी निकल सकती है? और दूसरा ये बता दें कि ये जो लड़के जो कैंप में लड़के आए थे सारे, उसमें साइम अयूब भी थे, सलमान अली आगा भी थे, तो इस तरह के जो नौजवान लड़के हैं जो बाकी भी जिनको नहीं बुलाया गया, क्या कहीं वो आपसे कहीं सवाल ना कर दें कि हमें एलीट खिलाड़ियों में क्यों नहीं शामिल किया? पहले आपका दूसरा वाला सवाल हैंडल कर लेते हैं. इस वक्त कोशिश ये हुई थी कि आइडेंटिफाई करें कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं लार्जर पाकिस्तान क्रिकेट के स्क्वाड को. तो इसमें कोई एलीट होने की बात नहीं थी, इसमें वो था कि कौन रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, और ये काम यहाँ पे ख़त्म भी नहीं हुआ. बाकी प्लेयर्स से भी कम्युनिकेशन जारी रहेगी, उनका फीडबैक भी लिया जाएगा. जिनको बुलाया गया वो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कोचेस के भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, पीसीबी की मैनेजमेंट टीम के भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे. सबको नहीं बुलाया गया, लेकिन कम्युनिकेशन उनसे भी जारी रहेगी. सो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस और ये आगे चलता रहेगा. जहाँ तक आपकी बात रही, सवाल रहा कि टाइम कम है, बट दैट शुडंट डिस्करेज अस. इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए बिकॉज टाइम कम है. हमें पता है कि टाइम कम है और हमने ये भी आइडेंटिफाई किया कि टाइम कम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी एफर्ट्स को दुगना या 3 गुना तेज़ नहीं कर सकते. नीड ऑफ द आवर है और हम करेंगे, और इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट शॉर्ट टर्म में भी नज़र आएगा, मीडियम टर्म में भी आएगा और लॉन्ग टर्म में भी आएगा. कोई भी इदारा इस तरह चलता है तो आपको अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स आइडेंटिफाई करने होते हैं. ओवरनाइट कुछ चीज़ें नहीं हो पाती, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ़ौरन तब्दील हो सकती हैं, और उसका रिज़ल्ट भी आने में कई दफ़ा फ़ौरन नज़र आ जाता है, कई दफ़ा टाइम के साथ नज़र आता है. बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप रेमेडियल मेजर्स की तरफ चले गए हैं. आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, आपने एक गोल बना लिए हैं और आपने उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया, और मॉनिटरिंग और फॉलोअप्स के साथ साथ ये इंश्योर करना है कि हम इनसे अब हटे ना.
इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसका रिज़ल्ट भी दिखाएगा हमें, आमीन। My question is both of coaches. 9 players are participated today's meeting. Most of them are out of form, like Shadab Khan, Saim Ayub, Babar Azam, and many others. Should we understand these players will be the part of next white ball and red ball series? The camp, the connection camp was about collaborating between players and PCB. We just wanted to discuss, various thoughts, ideas, and identify opportunities to collaborate better together. So, I thought it was very productive. Really enjoyed the discussions. Really enjoyed everyone's contributions. Everyone was very open and honest, and shared well. And I think that's something that really resonated with me. It was fantastic to have everyone together. So thanks. I think Jason's answered it really well. Just to add that the players that were there were representative of the broader group of players in Pakistan cricket. We can't have everyone there. They basically represented the players. अच्छा अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान की मुसलसल जो नाकिस परफॉर्मेंस थी उसके बाद चेयरमैन पीसीबी ने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर सर्जरी होगी तो बहुत से सवालात उठने लग गए फिर बांग्लादेश से भी हम सीरीज़ हार गए इन फ्यूचर हो सकता है कि कैप्टन को बदल दिया जाए बाबर आजम कैप्टन नहीं होंगे तो ज़रा ये क्लियर कर देंगे क्या चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए कोई ऐसी मुशावरत की गई है कि इन फ्यूचर कौन कैप्टन होगा मेरा ख्याल है ये वाला सवाल आपको चेयरमैन साहब से ही पूछना पड़ेगा। मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं कि कप्तानी अपॉइंटमेंट्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ये इसका एजेंडा आज का था नहीं सो इसके ऊपर ना कोई डिस्कशन हुआ है ना इसके ऊपर कोई डिसीजन हुआ है ये वो चीज़ें जो कि बाद में इनके ऊपर डिस्कशन हुआ आज जो था इट वाज ऑल अबाउट कनेक्शन कैंप नॉट मेकिंग एनी डिसीजंस रिलेटिंग टू द कैप्टनसी और द मैनेजमेंट और द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एनओसी सो एंड सो फोर्थ। Hello, my question is from both of the head coaches. As there were some rumors that there are some communication gap between the players and especially unity, as we saw in the T20 World Cup and now in the Bangladesh series, we lost the series. So how are you going to improve the unity in Pakistan cricket team? And do you think there are some gap between players and the management? It was really good to come here and get together and have a connection camp. It was something that we identified that obviously with a lot of cricket coming up, both domestically and internationally, that if we could get a group of people together, a playing group, players that we were able to have here around their commitments, as well as staff of the PCB. It was fortunate that Gary and I were able to be here to be able to share some ideas and some thoughts. And we felt we made some real ground today. I know you guys are wanting answers to all sorts of questions, but as Sammy has mentioned, it was a connection camp, and it's work in progress. There was some really good, robust, honest discussions, and really pleased to be a part of it. Gary and I have been made to feel very welcome, and it's we're learning a lot. As I said before, this was a day of listening and learning for us. So it was fantastic to be part of, and so getting to know players and people that work at the PCB has been a real breath of fresh air for us. It's been fantastic. I think today was all about getting everyone to fly in formation in Pakistan cricket. We all want the team to be successful, and I think the intention was to align our thinking around how best to do that. Certainly the session that we and Jason had with the players was fantastic. I think we took a lot of learning out of it, and we saw a real intent from the players to make good. They want to represent their team
and their country as best that they can. So there's a real intention around that, and they're really motivated to do well for the country going forward. My question, both head coaches. For last 3 or 4 years, Pakistan cricket team struggling both red ball and white ball, especially in red ball. Even we lost against Bangladesh series in the first time in history. And what is your thoughts? This connection camp, how will help Pakistan cricket team to improve their performances? And your thoughts, especially there is lack of confidence in players or fitness? It was a great opportunity for us to come together for the connection camp and just listen to players. As Gary alluded to, we had some fantastic sessions with them today to learn a bit about how they're going, how they're feeling, how they identify opportunities where we can be more effective. And as I said, it was really good discussions. But these discussions will be ongoing, and we keep learning. You know, Gary and I, like, relatively new to these jobs, so our job is to listen and learn, and look to implement ways where we can be more effective as individual players and as a team and as coaches. You know, how can we support the players, because that's what we're here for. We're here to support the players. The players are the ones that go out there and do the job. What was really clear today was just, as Gary alluded, the pride that Pakistan players have playing for Pakistan and how they want to inspire the country. And, you know, that was really exciting to hear as the head coaches. The players care, and they're desperate to do well. And, you know, we're on this journey together, and we're going to do everything we can to help. Just to add to that, I've been here for the last 12 days or so watching this Champions Cup, and I've been really encouraged at the depth of quality of players in this country. So it was fantastic to see. I've really enjoyed the tournament. The quality of the competition has been high, and it's been great to see a lot of young players showcasing what they are capable of. So there's a lot of good cricketers in this country. So, you know, for us, our responsibility is to build the team out as best we can to make sure that they're all flying in formation and they're giving the best of themselves going forward. One more thing I'd like to add, and I think I'll ask if you guys agree with me or not, but one of the other conclusions that we came across after this camp was the sense of pride that the players feel and their desire to be successful. And I think that was just unanimous across, and a very strong sentiment on that. And if I may just add, what Gary said in his statement was to play for the name that is in front of the shirt, not at the back. And there was a commitment and resolve within that group, whether it was the team, coaches, or the management, that everyone has to come together for the name on the front, not at the back. So with your permission, and this was Gary, so he deserves the credit for giving that inspirational message to all concerned in that room. My question is to both of coaches that after evaluating or analyzing all the performances of Pakistan cricket team, what do you think, how much time it would take for the team of Pakistan in both in white and red ball cricket, how much time it would take to Pakistan to come back on track or to fight for the trophies and win the ICC trophies? I think we all want a successful team, don't we? And we want the team to do well in everything that they play in. And there's no reason why it can't. It's a very talented cricket team across all the formats. But there are processes that you need to put in place. And I think that's what we're focusing on. We want to know that we've got a robust system in the country, and that there's competition for places, and that our team is, as is mentioned earlier, is unified in its approach
to competing against the best teams in the world, and as you've said, competing to do really well in all these big competitions that are going on around the world. So we're really focused on that. We want to get consistency in the performances going as best we can, and we know that there's a system and a process that we need to go through for that to happen. We'll take last 3 questions because the gentlemen have to take their flights. 2 from this side and 1 from that side. सलमान भाई, आपसे मेरा क्वेश्चन है, आपने भी बात की कि हमने टीम यूनिटी के ऊपर भी बात की इस पूरे सेशन के अंदर और परफॉर्मेंस की ओवरऑल. प्लेयर्स का अभी तक पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं आया कि प्लेयर्स ने भी कोई रिजर्वेशन शो की इस अब तक की जो परफॉर्मेंसेस हुई उसके ऊपर, क्योंकि टीम यूनिटी और फिर उसके अलावा वर्कलोड का भी प्लेयर्स का काफ़ी प्रॉब्लम रहा है. तो क्या इस कनेक्शन कैंप के ऊपर वर्कलोड के ऊपर भी बात हुई, क्योंकि खिलाड़ी ये समझता है कि अगर वो मैच अगला नहीं खेलेगा तो शायद वो दोबारा टीम में नहीं आएगा अगर वो रेस्ट पे चला जाता है. तो खिलाड़ियों को भी ये रिजर्वेशंस हैं, और फिर मिसकम्युनिकेशंस की भी बात होती है, पीसीबी की पॉलिसीज़ के ऊपर भी बात होती है. तो क्या खिलाड़ियों ने क्या कहा, हम वो भी जानना चाहते हैं. देखिए, ज़्यादा तफसील पे तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, बिकॉज़ हमने ये जो सेशन किया इसको हमने एक सेफ़ स्पेस बनाया ताकि लोग ओपनली बात कर सकें. जहाँ तक बात है यूनिटी की, तो वो खाली टीम के हद तक नहीं था. इट वाज बिटवीन पीसीबी मैनेजमेंट एंड द टीम, एंड हम इकट्ठे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं टू बी मोर सक्सेसफुल. सो वर्कलोड मैनेजमेंट एट्सेट्रा, बिल्कुल दीज वर पार्ट ऑफ डिस्कशन. उन्होंने बिल्कुल रेज़ किए. हमने प्लानिंग के ऊपर बात की, हमने वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर बात की, और बहुत से और इश्यूज़ पे बात की. लेकिन येस, दिस फीचर्ड अमंग्स देम. Jason, first question is to you, how you can prepare for the upcoming test series while playing one-day tournament? And the second part to Gary, we are even a single victory didn't came in this tournament by chasing. So how you elaborate this chasing problem of whole Pakistani cricket in one-day game? Okay, this session was about communication cap, not about analyzing or reviewing the performance of the team of the players. So that is something that we will address in a later press conference. Let us stick to this topic. Let us stick to this topic, please. Because the players' performance or the Champions Cup was not under discussion in this session. Sure. सभी भाई, मेरा ज़रा मुतरजम बन जाइएगा, मैं सवाल करता हूँ. मेरा दोनों कोचेस से ये सवाल है कि, और सलमान भाई आपसे भी ये बताइएगा कि ये सेशन कितना ज़रूरी था. माजी में हमने देखा कभी ऐसा नहीं हुआ कि तमाम लोगों को, प्लेयर्स को, कोचेस को एक साइड पे बिठा के उनसे ये बात की जाए कि यार हम कैसे ठीक कर सकते हैं. तो आज के सेशन से आपने एक पॉइंट कौन सा ऐसा निकाला है कि जो आपको अगला प्रोग्राम करने में मदद फराहम करे? I think for me the exciting thing about this connection camp that we've had is that we're trying to get everyone flying in formation and aligned to this team being a very successful cricket team. And we also need the media in that. You know, we need the media to be supporting this team as best it can to make the people of this country proud. And that's certainly what we're doing. I mean, these players are motivated to do well for their country. And you know, the performances haven't necessarily been where all of us want them to be, and we've got work to do. And I think we've acknowledged that we've got work to do. But I think there's a real desire and motivation out of this camp that we get this team being a really successful cricket team. And I think that's exciting. And everyone, all stakeholders in Pakistan cricket play a role, because the purpose is bigger than just being a successful cricket team. I think it adds massive value to the well-being of the nation in this country. And I think that's the importance of what this camp was about. Yeah. And just following on from that, the real takeaway from me is just how deeply the PCB, everyone at the PCB, they love and care, very proud. Sal mentioned pride, that is shone through. Everyone who walks
They want to inspire the nation. They want to motivate people. They want to make everyone proud. Please remember, they were little kids dreaming of representing Pakistan. Now they're actually living that dream. And it's our job is to support them as much as we can. I'll do everything in my power. Gary will do everything in his power to help these players go out there and represent Pakistan to the best of their ability. So I think I sort of mentioned it earlier also, and वही बात सबसे ज़्यादा रेजोनेट की है कि एक डिज़ायर है, एक प्राइड तो है ही है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक डिज़ायर है कि हमने सक्सेसफुल होना है, और वो आई थिंक हमारे मोटो के साथ बड़ा रेलेवेंट था कि वी कैन, वी हैव एंड वी विल इंशाल्लाह. I understand that both of the coaches must have been having so many chances to talk to players and to the officials, and I just want to ask that what made it different here? What was the special occasion for the players and for the coaches to talk to the PCB? I'm just asking that both the coaches must have had so many chances to talk to the players and to the PCB officials at different times. What make this chance different for the players and for the coaches in the connection camp today? I think, yeah, you can have one-on-one conversations with people, but I think the key difference is the connection with everyone in the one place together, sharing thoughts and ideas. So that's probably the difference, is that everyone was together, as opposed to one-to-one conversations at a cricket ground, at a training facility, or at a hotel cafe. This was everyone together, bouncing ideas around, sharing experiences, sharing stories, getting to know. Some guys didn't know each other particularly well, you know, some players and people that work at the PCB. So it's just an opportunity to, as Sammy said, to connect, and that's probably the big takeaway for me. I think as well, not often that you get the opportunity to connect with all stakeholders in the game outside of performance time. We're always 2-3 days away from a game. And you know, you're strategizing, you're preparing for matches. And you know, everyone's a little bit stressed out because they want to do well. So we all narrow our focus and get the job done and to do what we need to do. And I think this was an opportunity just to broaden it out a little bit, open up. And as Jason said, just to get to know each other a little bit. Even people working, dedicated people working in the PCB, who are doing the best job that they can for the better of this team. So that was the purpose of it. Last question, Chaudhry Ashraf. सलमान, बहुत सारी ऐसी मीटिंग माजी में भी होती रही हैं, उनके रिजल्ट किस तरह के आते रहे ये भी आपने भी देखा है. कितना हम होपफुल रहें? डिज़ायर तो हर किसी की है कि हम जीतने की डिज़ायर तो किसी में, जिस तरह आप कह रहे हैं खिलाड़ियों में, बोर्ड में, इसी तरह कौम भी चाहती है कि ये टीम जीतती रहे और कामयाबियां हासिल करे. और जिस तरह के माजी में रिज़ल्ट रहे हैं, जिस तरह की खिलाड़ियों के अभी फिटनेस टेस्ट भी लिए गए हैं, तो कितना हम पूरा उम्मीद हों कि ये जो फिटनेस टेस्ट है उसकी रिपोर्ट भी जारी नहीं की गई कि कितने खिलाड़ियों के वो फिटनेस टेस्ट पास हुए हैं और उसके ये कितना फ़ायदेमंद होगा. और हम क्या समझ लें कि इस मीटिंग के बाद अब हमारे जो खिलाड़ी हैं जो तफरके का शिकार थे, अब वो एक होकर मुल्क के लिए खेलेंगे? देखिए, शायद इस नौयत की ये पहली मीटिंग ही थी. पहले भी फीडबैक सेशंस होते हैं, आपकी बात ठीक है. जो चीज़ यूनिक थी इस बारी इस कनेक्शन कैंप की, वो ये थी कि जो सारे स्टेक होल्डर्स थे वो अपने सिर जोड़ के बैठे हैं, और कोशिश ये की गई. इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करना चाह रहा, क्योंकि हमने ये इंश्योर किया कि जी एक सेफ़ इन्वायरमेंट में आप खुल के बात करें और जो मसले हैं खुल के बताएं, खा वो मैनेजमेंट की साइड से हों या प्लेयर्स की साइड से हों, ताकि जब वो पता चल जाए तो हम उसके लिए फिर सोल्यूशन ढूंढें.
प्लेयर्स हैं इकट्ठे, ऐसी बात नहीं है कि वो जो चलता रहता है मीडिया में कि पता नहीं लड़ाइयाँ और टांग खींच रहे हैं एक दूसरे, ऐसी बात नहीं है. डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हर एक के होते हैं. मेरे इनसे भी हो सकते हैं, समी से भी हो सकते हैं, आपके हमारे होते हैं. अच्छी बात होती है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, नई चीज़ सामने आती है, दूसरे का व्यू सुनना ज़रूरी होता है. फिर उस व्यू का करना क्या है, वो अक्सर मकसद था आज के कनेक्शन कैंप का, कि एक तो सब इकट्ठे मिलें, खुल के आइडियाज़ एक्सचेंज करें, मसले आइडेंटिफाई करें, कमिटमेंट मांगें कि ये हमें चाहिए तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं या और बेहतर हो सकते हैं, खा वो मैनेजमेंट साइड हो या प्लेयर्स हो. और फिर उसके आगे रोड मैप बनाना कि ये कैसे इनको देना है, क्या रीज़नेबल है, क्या जल्दी हो सकता है, क्या थोड़ा टाइम लगेगा. तो जैसे मैंने पहले कहा कि शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं. अल्लाह खैर रखेगा, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी. कुछ जगह ज़्यादा जल्दी आ जाएगी, कुछ ज़्यादा देर में.